Hello guys, welcome back to my channel. This video I'm going to make on my friend's request that how to refine the equipment and why the equipment powers is dropping or increasing when they refine. So दोस्तों ये वीडियो मैं आज अपने दोस्तों की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ कि इक्विपमेंट्स की पावर जो है जब रिफाइन करते हैं इक्विपमेंट उसकी पावर बढ़ती है और कभी कम हो जाती है. So how to refine the equipments? So guys, you can see this equipment I picked for the example. So this equipment power is 657. So दोस्तों आप देख सकते हैं कि 657 पावर है इस इक्विपमेंट की. मैं रिफाइन करूँगा. So let's refine. So I click on the refine. So there are number of things. First I will explain about the power. I click on the refine. So there are different refining powers or attributes you can see in the list. All these have different than the old one. So you can see 1.2%. Don't worry about the left hand side what they are going to give us. We are going to discuss about the power increase or drop. Then I will explain how to get the better refining from the left side whatever they have written, but we fix up the power increase or drop. So previous refining was 1.2%, 1.6%, 57 and 40. Now I am getting 1.2%, which is similar to the previous one. So another one 1.6%, which is similar, but plus 14 and 7 is dropping. So दोस्तों पहले हम बात करेंगे कि पावर बढ़ाने के बारे में और कम होने के बारे में इक्विपमेंट की. So इसमें आप देख सकते हैं कि 1.6 1.2% जो पहले वाली रिफाइनिंग पावर थी उसमें सिमिलर है, मगर 57 एंड 40 ये दो जो है वो कम हो रहे हैं. मैं कंफर्म नहीं करूँगा अभी, पहले मैं पीछे जाऊँगा. सो आई विल नॉट कंफर्म दिस वन. वी गो बैक टू चेक दिस इक्विपमेंट पावर अगेन. इट वाज 657. सो यू कैन सी ऑन द टॉप 657. दिस वाज द पावर. I click refining again, go to the refine, I confirm. This definitely dropping 564. You can see the power is dropping. Click on refine again, refine. Now you can see 1.2%, 1.2% and 1.4% of the equipment power, but there is a 32 which is dropping. But in the previous refining we had 1.2%, 1.6%. But if you calculate the total percentage, it's coming up 2.8. 1.6 plus 1.2 is 2.8%. But above that it's plus 14 and plus 7. These are not really increasing too much power, but give you little bit increment. So दोस्तों ये जो प्लस में जो दिया हुआ है इसकी ज़्यादा पावर बढ़ाने में हेल्प नहीं होती. ज़्यादा पावर बढ़ाने में परसेंटेज की महत्वता या कह लो या ज़रूरी जो है इम्पोर्टेंस जो है वो परसेंटेज की होती है. सो द मेन इम्पोर्टेंस ऑफ the increasing equipment power is percentage. So I confirm. You will see because I am increasing total percentage. So 1 2 3 in the new one 3.8% total. Let's confirm. It's a 644 increasing power. Let's go. Now you can calculate total percentage again. So is 4%.
So calculate the new one and the old one. So it's increasing. It's a 682. It was 644. So try to get the percentage for the equipments. Note the plus, this plus signs given in the mounted troop HP. So दोस्तों ये जो mounted troop HP के साथ में ये प्लस में जो पावर बढ़ा रहा है, इसको हटाकर आप परसेंटेज के ऊपर ध्यान दें. And now let's talk about particular refining, that how you can get the best refining. For example, you want to increase mounted troop HP. So let's refine this. So I got Sage Machine HP. I cancel it. Refine again. So I'm getting range troop HP. For example, I want to keep the range troop HP, but at the moment it's very less. So here you can see the mounted troop HP. Mostly people want mounted troop HP or range troop HP, because range troop attacks used for attacking on the buildings mostly, and the mounted troops they have been used for the hunting. So दोस्तों ज़्यादातर लोग रेंज ट्रूप और माउंटेड ट्रूप्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं, रिफाइनिंग उनके इक्विपमेंट्स को करते हैं. माउंटेड ट्रूप्स को मॉन्स्टर हंटिंग के लिए, मॉन्स्टर्स को मारने के लिए यूज़ करते हैं, और रेंज ट्रूप जो है वो जब अटैक करना है दूसरे लोगों पर उनके लिए रेंज ट्रूप का यूज़ करते हैं. So now I want to keep this. I click on this and I will lock. If you have lot of gems, and you don't want to lose this mounted troop HP percentage, and you don't care about the other ones, I'll lock this one, and this will cost me 1500 gems to refine one time. And when I refine, when I see the percentage in on the other 3 refining attributes, like I want mounted troops HP on the refining, so I click, it will cost me 1.5% or 1.5k, so 1500 gems to refine to get the attributes, better attributes. And if I lock one more, it costs me 3000 gems. And if I lock one more, like for example I received these 1 2 for mounted troop HP, the other 2 are missing, I lock again, that costs me 5000 gems to one time refining. And the last one, when I get the mounted troop HP, I will stop refining when I'm satisfied. But this going to be very costly for the beginners. The new users, they just refine, and when they see the percentage, higher percentage, then they can accept it. But make sure refine with the gold until you get good refining results. And now I have range troop HP first 2, so I'm satisfied. I click on it, I can see 730 power. So these are the ways. So दोस्तों आपने देख लिया कि जब आप लॉक करेंगे एक, तो आपको 1500 जेम्स की ज़रूरत पड़ेगी रिफाइन करने के लिए एक बार. 2 करेंगे तो 3000, और 3 करेंगे तो 5000 जेम्स की ज़रूरत पड़ेगी. और आपको, आपके पास जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्टिंग की है, जिन्होंने गेम, उनके पास बहुत सारे जेम्स नहीं हैं. इसलिए आप रिफाइनिंग गोल्ड के साथ करें. जब आपके पास जेम्स होंगे और आप रेडी होंगे अपने कोई एक इक्विपमेंट को अच्छे रिफाइनिंग देने के लिए, तो तभी आप अपने जेम्स यूज़ करें. फॉर नाउ रिफाइन विद द गोल्ड. व्हेन यू सेटिस्फाइड विद द रिफाइनिंग, कीप देम. बट डोंट फॉरगेट, व्हेन यू सी दिस प्लस साइन in the refining, that plus 10 is increasing the power, don't accept it. Try to get the percentage for the equipment powers.
or equipment refining powers. The percentage boost more than these normal numbers of the increments, these numbers of the powers, refining powers. So try to get the percentage. So दोस्तों परसेंटेज लेने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो नंबर्स दिए हैं इनसे ज़्यादा परसेंटेज ज़्यादा हेल्प करती है ज़्यादा पावर बढ़ाने में इक्विपमेंट की. सो ज़्यादा परसेंटेज ज़्यादा equipment power. So thanks guys, thanks for watching, have a good one, enjoy your game. So these are the facts for equipment's powers and refining. For refining, you found it that you required the gems. I cancel it, so you lock it, you will cost gems. So thanks guys, have a good one, enjoy your game. I'll see you in the next video with more tips and tricks.